अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना आगा खान और मैं इस वक्त मौजूद हूं कॉन्सुलेट ऑफ लिबरलैंड और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप लोग सारे जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर लिबरलैंड के बिहाफ पे पाकिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सना फॉर कमिंग टू द काउंसलेट एंड इनवाइटिंग अस ऑन योर शो। मेरा नाम फैसल भट्ट है। आई एम द काउंसल जनरल ऑफ लिबरलैंड टू पाकिस्तान और मैं 2017 से पाकिस्तान में पोस्टेड हूँ। इससे पहले आई वाज इन यूके। माय एजुकेशन इज फ्रॉम लंदन और टॉकिंग अबाउट पोजीशंस व्हिच आई हेल्ड बिफोर दिस, मैं रेड क्रेसेंट, एज यू नो पाकिस्तान रेड क्रेसेंट, उसका मैनेजिंग कमेटी का यूके एंड यूरोप का चेयरमैन था। और उसके अलावा आई वाज ऑलवेज इनटू डूइंग अ लॉट ऑफ सोशल वर्क, डूइंग वेलफेयर फॉर द पुअर एंड नीडी ऑन गवर्नमेंट लेवल एंड ऑन माय पर्सनल लेवल एज वेल। तो दैट्स अबाउट इट। ये है और एज वी गो अलोंग we'll talk about all the things I've done for the society. अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि लिबरलैंड का क्या हिस्ट्री है, क्या किस तरह ये वजूद में है? जी बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट लिबरलैंड, लिबरलैंड इज बेसिकली रिपब्लिक ऑफ लिबरलैंड। ये एक एक्स यूएसएसआर एंड देन फ्रॉम यूएसएसआर एक्स यूगोस्लाविया एंड फ्रॉम यूगोस्लाविया जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद क्रोएशिया और सर्बिया की वॉर के अंदर ये एक अनहिबिटेड लैंड, पीस ऑफ लैंड था विच वाज नीदर क्लेम्ड बाय क्रोएशिया और सर्बिया। और 2015 के अंदर अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल लॉ दैट्स कॉल्ड टेरनूलिया, हमारे करंट जो प्रेसिडेंट है मिस्टर विट जेटलिका, उन्होंने इस लैंड को विद द इंटरनेशनल लॉ टेरनूलिया क्लेम किया। And at that time, neither Croatia nor Serbia were claiming it. So it was claimed by our president, Vit Jetlika. Or this is the third smallest island. First is the Vatican City, then is Monaco, and then is Liberland. It's 7 kilometers square. It's part of the Europe, but it's not part of the European Union. So it's not claimed by neither of the countries. So when we initially started, people were not that keen on Liberland. लेकिन हमारे प्रेसिडेंट का ये था कि I'll tell you about our president as well, Vit Jetlika. He's a Czech Republican person and he's the president of the Czech Libertarian Party. तो उनको ये लगा कि गवर्नमेंट जो जितनी कंट्रीज हैं उसके अंदर जो लोकल नेशनल्स होते हैं, गवर्नमेंट्स का जो है अपने नेशनल्स की डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। सो व्हाट ही वांटेड टू बिल्ड अ न्यू कंट्री जहां लोग आराम से फ्रीली रह सके विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इनटू देयर डे टू डे लाइफ। और हमारा जो मोटो भी है दैट इज टू लिव एंड लेट लिव। तो एज वी स्टार्टेड अलोंग इनिशियली इन 2015, पीपल वर नॉट दैट कीन, क्योंकि जब भी दुनिया में कोई एक नई चीज़ आती है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डाइजेस्ट इट, टू एक्सेप्ट इट। लेकिन इनिशियली इट वाज बिट डिफिकल्ट, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली as the people with libertarian mindset started to get along with Liberland and its idea, we started to grow. At present हमारे पास 106 countries में representations हैं and Liberland has got one of the best beaches in the world. और when we talk about Liberland's currency, it's initially it was Liberland Merit और अब उसका नाम चेंज होकर Liberland Dollar हो चुका है। And when we talk about the value, so $1 Liberland is equal to 1 USD. That is the exchange rate. And that can tell you how strong the Liberland's economy is. Talking about Liberland, हम जब उसकी economy की बात करते हैं, it's a tax-free nation. जैसे क्योंकि मोटो ही टू लीव एंड लेट लीव है, तो लोगों के ऊपर टैक्सेशन का बोझ नहीं हम लोग डाल रहे। द टैक्सेशन देयर इज वॉलंटरी, सो वट एवर यू थिंक इज गुड इनफ फॉर द गवर्नमेंट आप वो डोनेट कर सकते हैं गवर्नमेंट को। ऑन द अदर हैंड, बिकॉज यू नॉट गिविंग एनीथिंग टू द गवर्नमेंट, इट्स नॉट अ वेलफेयर स्टेट। सो वट एवर यू डू, वट एवर यू यूज, यू हैव टू पे फॉर इट। It's as I said, it's not a welfare state, so the housing, the benefits, it's not you're not entitled to claim that in Liberland. But what Liberland offers you, it offers you a beautiful country with the less invasive policy by the government, a tax-free nation with beautiful beaches, and it's a country that is quite different from the rest of the countries.
लिबरलैंड के अंदर हमारे पास वी आर द पायनियर्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन इज अ न्यू वे ऑफ स्टोरिंग डेटा where a person can start right from the top and go right till the end to see how exactly the data has been stored, where it has been used and who has accessed it. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई। उसके बाद वी आर दी पायनियर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। I mean, what I mean to say is that pioneers in a sense that we are the first few countries that accepted Bitcoin as an official currency and we used it in our government portal. Uske alawa, we have, I don't know if people are quite familiar with Metaverse. What Metaverse is? Metaverse is a virtual world. And Liberland has the major part or the major chunk of metaverse that is owned by Liberland. And on the other hand, Liberland is the first country to be made in metaverse as well. देखिए physical तो है, virtual world में भी बनी हुई है and that is the first country. इसके अलावा we do e-governance. E-governance is that people can, check everything what the government does. It can check the government's budget, how it's spent. It's all clear and a lot of clarity is made sure when we make the policy. और इसके अलावा Liberland has backing from plenty of the countries. We're not part of the full bench of the of the United Nations because you need 25 affiliations or acceptance from the different part of the world. Abhi, at present, we've got MOUs signed with just over 21 countries. We've got strong representations in America. अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि कितनी कंट्रीज ने फिलहाल लिबरलैंड को रिकॉग्नाइज कर लिया और कितनी क्लोज टाइज हैं आपकी इन कंट्रीज के साथ? जी बिल्कुल। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 21 कंट्रीज के MOUs जो हैं वो साइंड हैं और उसके अलावा हमारी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशंस जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स पे बहुत ज़्यादा हैं। वो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ही वाज इनवाइटेड ऑन द ओथ टेकिंग ऑफ जो बाइडेन एंड वी गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशंस देयर। उसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर स्ट्रॉन्ग कंट्रीज दैट इज़ यूके के अंदर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर तारिक अब्बासी, ही इज़ द स्टेट सेक्रेटरी ऑफ लिबरलैंड एज वेल, और उसके अलावा ही इज़ द डेप्यूटी लॉर्ड लिeutenant ऑफ लंदन. So that is a very strong position which he holds in the UK government. So that also shows that we have the backing indirectly from there. Otherwise, because of the conflict of interest, the UK government won't allow Dr. Tariq Abbasi to hold that position. उसके अलावा टर्की के अंदर हमारे बड़े strong representations हैं. हमारे जो टर्की का representative है, he is the son of the mayor of Istanbul. And apart from that, we've got major high-profile representations in Europe. उन सब में से I would say that Italy, France, Germany. These are the leading countries where our quite strong representations are. सर, लिबरलैंड का जो आप अहाता बता रहे हैं बहुत छोटा सा है, मतलब इतना तो हमारा आई थिंक लाहौर ही है। तो इतनी सी जगह पे और इतने सारे कम मतलब इन चीजों के साथ आप लोग किस तरह मतलब इतनी ज्यादा जल्दी तरक्की कर रहे हैं इन मामलात में? जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, एज आई इनिशियली सेड दैट लिबरलैंड इज द थर्ड स्मॉलेस्ट आइलैंड। हमसे ऊपर जो मोनाको है that is even smaller than Liberland, and Monaco is one of the richest islands of the world. When we talk about Liberland, we have started things which are different to the rest of the countries. जैसे हमने ब्लॉकचेन की बात की, मेटावर्स की बात की, लोगों को मैं ज़रा ये क्लियर कर दूं, when we say that Liberland has major chunk of metaverse, that things, physically things जो हैं वो शायद इतनी महंगी ना हो जितनी चीज़ें मेटावर्स में महंगी हैं। तो I can, let's suppose in normal world you might buy a thing for $1, but the same thing in metaverse would cost you $250. This is just an example. तो हम लोग जो हैं, we're a country that is more based on IT, technology and things which not the other of the 205 countries do. तो इसलिए हमारी जो revenue है, how do we generate revenue? We generate revenue by day-to-day trading of the people. ठीक है, देखें, जब हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि और उनके ऊपर कोई टैक्स बाउंड नहीं कर रहे,
So I'm sure when people make money, they will happily donate whatever they think is good for the country, and that is where Liberland comes in. We promote day-to-day business of the people, and that is how we generate money. सर टैक्स फ्री कंट्री बना के आप लोग कैसे सरवाइव करेंगे? तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीजों को मैनेज करना. जी बिल्कुल हो जाता है, लेकिन देखें एज आई सेड बिफोर के इट्स नॉट लाइक अ टिपिकल कंट्री. वी इंट्रोड्यूस थिंग्स, वी गिव पीपल द प्लेटफॉर्म, दे जनरेट मनी, दे मेक मनी एंड दे गिव अस अ चंक ऑफ इट. और हमारे लिए वो इजी हो जाता है, और क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट नहीं हैं, सो आवर डे टू डे एक्सपेंसेस आर नॉट दैट मच. सर लिबरलैंड किन लोगों को एक्सेप्ट करता है? मतलब पाकिस्तानी बहुत सारे हैं, पूछते हैं कि भाई हमने आउट ऑफ कंट्री जाना है, लिबरलैंड डिफरेंट कंट्रीज में, तो वो किस तरह की आवाम को एक्सेप्ट करता है, और किस तरह उसका वीजा और पासपोर्ट वगैरह कैसे मिल सकता है? देखें लिबरलैंड का वीजा एट प्रेजेंट तो इट्स ओनली बाय इन्विटेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट को आपकी जरूरत है, दे विल इनवाइट यू एंड गिव यू द वीजा टू कम एंड विजिट लिबरलैंड. और जहां तक बात है पासपोर्ट की, लिबरलैंड का पासपोर्ट कोई भी अप्लाई कर सकता है. इट्स एन ऑनलाइन एप्लीकेशन. यू हैव टू विजिट आवर गवर्नमेंट्स वेबसाइट एंड अप्लाई देयर. और उसके बाद देखें, यू कैन अप्लाई द पासपोर्ट, बट the question is, why would Liberland give you the citizenship? It's not as if you pay Liberland $10,000 or $1 million, Liberland would give you citizenship. जो लोग Liberland को कुछ back दे सकते हैं, like professionals like scientists, high profile doctors, athletics people, or people who are on the broader picture of the world, Liberland would love to give them citizenship, and that too free of cost. और कमिंग बैक टू दी पाकिस्तानी सोसाइटी, देखें पाकिस्तान के अंदर वी डोंट नीड दी इनिशियली एट प्रेजेंट वी डोंट नीड दी लेबर क्लास. क्यों? क्योंकि हमें सर्बिया से, पाकिस्तान से भी ज्यादा सस्ती लेबर मिलती है, विच इज जस्ट नेक्स्ट डोर टू लिबरलैंड. तो पाकिस्तानी कौन से जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, हाई प्रोफाइल साइंटिस्ट, हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं बट हाई प्रोफाइल. I mean, not like a normal doctor would say, you know, like, I want Liberland citizenship. तो वो डॉक्टर्स यूरोप के आसपास बहुत ज्यादा हैं, और I'm sure they would be more professional. तो वहां से हमें मिल सकते हैं, but we're not looking for that. देखें, जैसे आपने कहा कि 7 किलोमीटर स्क्वायर है, अगर 7 किलोमीटर स्क्वायर में अगर हम ये 205 मुल्कों के आम लोगों को बना लेंगे, तो ये एक आम मुल्क होगा, और 7 किलोमीटर स्क्वायर में लोगों को अकोमोडेट करना भी मुश्किल होगा. तो हमें वो दुनिया की क्रीम चाहिए कि जो वहां आए और काम करे, और we would give them citizenship. Now, on the other hand, the question arises, why would that cream come to Liberland? That's a big question. इससे पहले आप पूछे, मैं पूछ लेता हूँ. जी सर. देखिए, a doctor, let's suppose working in Europe, if he earns 100,000, उस 100,000 में से he has to give 45% tax. ठीक है. यहाँ लिबरलैंड में वो 100,000 अर्न करता है, वो 100 का 100,000 goes right into his pocket. He doesn't need to pay any tax. ठीक है. तो वहां वो डॉक्टर 100,000 अर्न करता होगा, उसको वेलफेयर की वहां जरूरत नहीं होगी, वो इंटाइटल भी नहीं होगा. यहाँ वेलफेयर तो हम दे भी नहीं रहे. बिल्कुल ऐसे. So this is what Liberland gives him. And then it's a country with the new technology, IT based, and a country with things which are very different to the rest of the world. अगर आप अपने जो नाजरीन हैं उनको ये पिक्चर्स दिखा सकें, जो मैं आपसे शेयर करूंगा लेटर ऑन, कि हाउ एग्जैक्टली लिबरलैंड इज मेड, तो बहुत ज्यादा लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट. अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डिजाइन कर रहा है? जी, हमारा जो लिबरलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज डिजाइन्ड बाय ज़ारा हदीद. ज़ारा हदीद जो है यूके के नंबर 1 आर्किटेक्ट्स हैं, एंड दे आर द टॉप 5 इन द वर्ल्ड. तो क्योंकि एज आई सेड इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, तो इट हैज टू बी डिजाइन्ड वेरी कीपिंग इन माइंड द एरिया and keeping in mind the things we need to accommodate. तो इसलिए हम लोगों ने जो दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट्स हैं, ज़ारा हदीद, यूके बेस्ड कंपनी, they are the ones that are designing our infrastructure. सर, आप आईटी के बारे में बहुत कह रहे हैं कि वहाँ पर आईटी के लोग बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं. क्या आप लोगों की वहाँ पर तरक्की है आईटी से लेकर? देखें, आईटी से रिलेटेड जो लोग हैं, द बेस्ट पार्ट ऑफ द थिंग इज दे डोंट नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन लिबरलैंड.
एक IT का बंदा पाकिस्तान में बैठ के ही कैन वर्क इन लिबरलैंड, वो लिबरलैंड में जॉब कर सकता है, लिबरलैंड में ट्रेड कर सकता है. दैट इज व्हाट लिबरलैंड इज ऑफरिंग यू. मतलब वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट थिंग कि मतलब हमने फिजिकली जाके कहीं रहना है. आई मीन हियर पीपल ऑलवेज आस्क, सर हाउ डू वी गो टू लिबरलैंड, हमें वीजा कैसे मिलेगा, हमें वहाँ जॉब कैसे मिलेगी. यू डोंट नीड टू डू दैट. आप यहाँ रहें अपनी फैमिली के पास, विद इन योर कम्युनिटी, विद इन योर सोसाइटी, विद इन योर फैमिली, एंड वर्क इन लिबरलैंड. ठीक है. आई मीन आप जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं लिबरलैंड के अंदर, आप अपना वर्चुअल बिजनेस कर सकते हैं वहां पे. आई मीन यू कैन वर्क थ्रू लिबरलैंड इन Amazon, यू कैन ट्रेड ऑन लिबरलैंड. हमारी मार्केट प्लेस है लिबरलैंड की, वे यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट्स सिटिंग इन पाकिस्तान, trade there tax free. The borders are open and you can, sky is the limit. देखिए, it depends on you कि आप एक चीज को कैसे यूज करते हैं. I'll give you an example. एक लेमैन को मैं आईफोन दे दूं, what would he do? Just receive calls and make calls. अब एक टेक्निकल बंदे को मैं आईफोन दूं, अच्छा, there are steps. This is the bottom one. Now we come to a next person. अब वो क्या करेगा, उससे सोशल मीडिया यूज करेगा. बिल्कुल ऐसे. ठीक है. Now we come to a technical, a person who is specialist. वो क्या करेगा, उसी आईफोन से he will start his business. ठीक है. प्रमोशन करेगा अपने बिजनेस की और वर्चुअली बिजनेस को रन करेगा. दिस कुड बी एनीथिंग. आप देख लें, उबर देख लें. A person can run his Uber through his mobile. आप फूड पांडा देख लें. These are all virtual businesses. तो इसी तरह this is the concept. People need to understand that, and then they can use Liberland as their platform to make money. अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आज अगर पाकिस्तान बैठता है, बात करता है कि हम कोलैबोरेशन करते हैं, तो लिबरलैंड किस तरह से हमें बेनिफिट्स दे सकता है? We would start off with bringing at least, as I said before, जो हमने पहले भी ऑफर किया था, at least $6 billion worth of investment to पाकिस्तान. ठीक है. ये तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है जो लिबरलैंड फ्रॉम डे वन लेके आएगी. उसके अलावा हम लोग जो है पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस से निकाल सकते हैं. वी हैव गॉट रिसोर्सेज, वी हैव गॉट पीपल ऑन आवर पोर्टल हु आर विलिंग टू डू दैट. और उसके अलावा हम लोग इंडस्ट्रीज जो हैं, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं, वी कैन ब्रिंग आवर इन्वेस्टर्स इनटू द कंट्री जो उन इंडस्ट्रीज को रिवाइव करें. And we can help Pakistan with the blockchain technology. We can help Pakistan with the IT. देखिए, the world is shifting from physical to virtual, and that is where our expertise are. तो हम पाकिस्तान को गवर्नेंस के अंदर भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे हमारी ई-गवर्नेंस है. If Pakistan is willing, that is a big question. If Pakistan is willing, we will help them to make e-governance. लेकिन उसका ये भी इशू है ना. देखें, we've got no issues, हम ट्रांसपेरेंट हैं. we've got no issues कि हमारी गवर्नमेंट को कोई बंदा जिस तरह मर्जी चेक करे. but some of the countries are not that keen. they want to keep the government's day-to-day running secret. So, but this is what we can offer, and we can help them with the education sector as well. जैसे हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटीज और वर्चुअल स्कूल चल रहे हैं. एंड with these things Pakistan can flourish. It's always a collaboration that matters, but the big question is that the intentions have to be clear. बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन चल रहा है, मगर ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, सो ब्रेक के बाद मिलते हैं.